Dear students, I would like to present to you a very interesting and important property of the normal distribution, one that is concerned with the shape, the beautiful bell shape of the normal curve. And the property is as follows. The normal curve has points of inflection which are equidistant from the mean. Now, students, what do we mean by point of inflection? ये क्या चीज़ है? Well, we mean a point at which the direction, you can say, or better, you can say the concavity of a curve changes. जैसा कि आप जो डायग्राम इस वक्त आपके सामने है उसमें आप देख रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कर्व जो है उसमें जहाँ पे पीक है उसके दोनों साइड्स पे थोड़ी दूर तक आप जाएं तो वो जो है दैट इज कॉनकेव डाउनवर्ड, वो पूरा पोर्शन फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड ऑफ दैट सेंट्रल पॉइंट. लेकिन उसके बाद आप देखें कि अगर आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएं या आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएं तो वो जो कर्व है उसकी डायरेक्शन जो है दैट इज कॉनकेव अपवर्ड. तो वो जो पॉइंट लेफ्ट साइड पे, वो वाला पॉइंट जो है जहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज होती है दैट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. एंड सिमिलरली on the other side, on the right side also, we have a point of inflection. The property that I just mentioned is that they are equidistant from the mean. And actually, it is quite obvious from the graph, okay, because it is absolutely symmetric curve, lihaza, they should have been equidistant from the mean. All right, now to do it properly, to do it algebraically, and to prove it to the world, how do we proceed? The first thing in this regard is to note that from calculus, we know that for any function f of x, the curve of which is a continuous curve, a point of inflection is obtained by solving the equation f double dash x equal to 0. यानी f of x जो है उसका सेकेंड डेरिवेटिव को हम 0 से इक्वेट करके जब उसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू उससे हमें मिलेगी दैट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ऑल राइट, सो लेट अस डू इट. हमारा जो PDF है, एज यू नो, 1 over sigma square root of 2 pi into e raised to minus half x minus mu over sigma whole square. इसका डेरिवेटिव ले लीजिए. That is the first derivative. And now you can see on the screen all the steps are there in front of you, which I would really not really want to read out every step. सिर्फ इतना जहन में रखिए कि e raised to f of x या w of x, any function of x, उसका अगर डेरिवेटिव लें तो वो क्या होता है? It is e raised to that same thing multiplied by the derivative of that which is in the exponent or the power. तो उसको आप अप्लाई कर लीजिए. And what is the final result as far as the first derivative is concerned? We get f dash x is equal to minus 1 over sigma cubed into square root of 2 pi. और इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इन द न्यूमरेटर x माइनस म्यू इनटू e रेज टू माइनस हाफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर. अब ये जो है इसका फिर से हमें डेरिवेटिव लेना है क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना चाह रहे हैं ना. मोड निकालना चाह रहे होते तो हम इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को ही 0 से इक्वेट कर देते. बट वी वांट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन and so we have to take the second derivative. तो अभी अभी जो आया था उसका derivative ले लें. And again, now all the steps are in front of you on the screen.
and you would have to apply the u into v formula, यानी derivative of the product का जो formula होता है वो आप apply करेंगे. You can do it yourself. Also, it is in front of you on the screen. तो ये जब अप्लाई किया तो फिर इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है? It is as follows. F double dash x is equal to minus 1 over sigma cubed into square root of 2 pi into e raised to minus half x minus mu over sigma whole square, and this whole thing multiplied by 1 minus x minus mu whole square over sigma square. तो अब ये जो है students, this is the one that we will equate to 0. And after equating, we have to solve it for x. So as you can now see on the screen, putting this whole thing equal to 0, we can write 1 minus x minus mu whole square over sigma square is equal to 0 multiplied by an expression that you can see, जो simply जो वो बाकी सारा expression है उसको हम दूसरी साइड पे ले आए हैं. But then obviously 0 into anything is 0, and therefore we are left with 1 minus x minus mu whole square over sigma square is equal to 0. तो फिर ये आप उसको दूसरी तरफ ले जाइए. What do you get? X minus mu whole square over sigma square is equal to 1. और उसके बाद sigma square को दूसरी साइड पे ले जाएं. What do you get? X minus mu whole square is equal to sigma square. अब आप ले लें square root, और square root आप जिस वक्त लेंगे, what will you get then? We will get x minus mu is equal to plus minus sigma. क्योंकि जाहिर है कि सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस सिग्मा भी हो सकता है और माइनस सिग्मा भी हो सकता है. Now we can take mu to the other side, and what do we get? We get x is equal to mu plus minus sigma. तो आपने देखा कि आपके पास दो रूट्स आ गई हैं इस इक्वेशन की. दो वैल्यूज आपको मिली हैं. x is equal to mu minus sigma and x is equal to mu plus sigma. अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी हमें एक स्टेप और करना है. वो कर चुकेंगे तो देन वी विल से दैट दीज टू आर आवर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर द नॉर्मल कर्व. और वो क्या है? वो ये कि x की ये जो दो वैल्यूज आई हैं, दीज आर दी जिसे कहते हैं ना एब्सिसा और ऑर्डिनेट, दो मिलके आपको वो ऑर्डर्ड पेयर मिलता है जो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो x की इन वैल्यूज पे बारी बारी हम देखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x. वो जो आएगी दैट इज द ऑर्डिनेट. इन दोनों को मिला के जो मिलेगा दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ऑलराइट, सो लेट्स सी. सो हमारा f ऑफ x जो है उसके अंदर हम ये पुट कर देते हैं. तो व्हाट डू वी गेट? 1 over sigma square root of 2 pi into e raised to minus half. अब वो जो मैं x minus mu over sigma whole square मुझे कहना था, उसकी जगह क्या कहना चाहिए? x की जगह क्या पुट करना है? mu plus minus sigma. So as you can see on the screen, e raised to minus half के साथ mu plus minus sigma minus mu over sigma whole square. So mu और माइनस म्यू कैंसिल यानी 0, और बाकी क्या बचा? प्लस माइनस सिग्मा ओवर सिग्मा होल स्क्वायर. तो अगेन सिग्मा कैंसल्स विद सिग्मा, तो क्या बचा? प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर. तो जाहिर है कि प्लस 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1 एंड माइनस 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1. सो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो उसके साथ अटैच्ड है वही काफ़ी है. So what do we get? 1 over sigma square root of 2 pi into e raised to minus half. अब आप उस e raised to minus half को नीचे ले आइए. What can you write? 1 over sigma square root of 2 pi into e raised to half.
ये सब कुछ डिनोमिनेटर में. And then, of course, e raised to half means square root of e. And we get 1 over sigma square root of 2 pi e. ये है f of x की वैल्यू corresponding to x equal to mu minus sigma and also corresponding to x equal to mu plus sigma. क्योंकि हमने दोनों ही इकट्ठे ही वहां पे पुट कर दिए थे ना. Therefore, the final word in this regard that the 2 points of inflection of the normal curve are given by the following 2 ordered pairs. The first ordered pair, mu minus sigma, comma, 1 over sigma square root of 2 pi e, and the second ordered pair, mu plus sigma, comma, 1 over sigma square root of 2 pi e. So therefore, we can say that the points of inflection occur on the left and the right of the mean mu at a distance equal to the standard deviation. क्योंकि आप देखें ना, एब्सिसा जो है वो क्या है, म्यू माइनस सिग्मा, और दूसरा वाला म्यू प्लस सिग्मा. तो वो जो कितना हम माइनस हुए, कितना लेंथ हम या कितना डिस्टेंस हम लेफ्ट को गए, सिग्मा, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू सिग्मा. सो इसलिए मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. वी कैन से that the points of inflection occur on the left and the right of the mean at a distance equal to the standard deviation. लेकिन याद रखिएगा कि वो पॉइंट्स नीचे एक्स एक्सिस पे नहीं है, उसके अगेंस्ट ऊपर कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स जो हैं above those points mu minus sigma and mu plus sigma. The 2 points, as I just said, mu minus sigma, comma, 1 over sigma square root of 2 pi e, and on the other side, on the curve itself, mu plus sigma, comma, 1 over sigma square root of 2 pi e. So this is why we have the shape of the normal curve as a beautiful bell-shaped curve. And this is why, students, many times in the world, people call it the bell curve.